This well and the tank stand as the symbols of revolt against dehumanization. What could be the tyranny of a society which denies even water to its fellow men? Human societies the world over are known to employ inhuman ways to subordinate fellow human beings into subjugation, discrimination, and enslavement. Many societies devised systemic exclusion of minority groups from social, economic, and political entitlements through physical force. India stands as an exception in degrading and dehumanizing the majority into physical and mental slavery by conceiving a social system of graded inequality powered through the engine of religion. It requires a social revolution to liberate the mass of humanity from the thraldom of a pernicious Brahminical social system. The story of BAMCEF is the culmination of liberation struggles of the oppressed majority of India to establish a democratic society. BAMCEF is not merely an organization. It is a movement for social revolution, a philosophy and a way of life which educated employees of the Mool Nivasi Bahujan Samaj have adopted for the reclamation of human personality in their motherland. The natives of India had the distinction of evolving a proto-democratic Indus civilization, touching the pinnacle of urban grandeur. India's bountiful resources brought in several intruders. Amongst all such entries, Aryan incursion has been so distinct that it devastated the democratic fabric of this country and launched systemic exclusion of the natives from the pedestals of governance, creating mental slavery among them. Providing several identities of subjugation from time to time like Anarya, Dasa, Sudra, Chandala, and of late as Hindu, the Arya Brahmanical minority could maintain their social, economic, and political dominance over the Mool Nivasis for centuries. Only the psychosocial revolution of Buddha could pull down the Varna system, paving way for rule by law and equality before law by Emperors Chandragupta Maurya and Samrat Ashoka. However, the counter-revolution of the Arya Brahmins, led by Pushyamitra Sunga in 185 BC, reinstated again the Brahmanical system based on caste sealed by the legal code of Manu. Several attempts to pull down the Brahmanical system did not succeed because they were partial, local, and short-lived. The social revolutionary movement spearheaded by Rashtrapita Jyotirao Phule, followed by Sahu Maharaj, Narayana Guru, Ayoti Thassar, Periyar, Birsa Munda, and Dr. Ambedkar, could expose the Brahmanical design and attack the system of graded degradation. As a result of their relentless struggles,
the Mulnivasi Bahujan Samaj could attain the constitutional guarantee of re-establishing democratic society. Let us leave aside slogans. Let us leave aside words which frighten people. The beneficiaries of the Phule Ambedkarite movement owe the social responsibility of taking ahead that movement to its logical end. The post-Ambedkarite socio-political situations called for the emergence of an organization like BAMCEF to reset the compass of social movement and refocus on the crucial mission of our forefathers. पूरा इन्वायरमेंट मूवमेंट का ही था उस समय, लेकिन मूवमेंट का मतलब इट वाज ऑल डायरेक्शनलेस. Because the basic objective was lacking, most of those organizations has vanished. Dominantly it was run through RPI. This period of first-class problems and second-class leadership has seen a plethora of leaders mushrooming on the scene, claiming to be the inheritors of Baba Saheb's mantle. So to say, 70, when the All India Executive Committee decided that the RPI shall have electoral alliance even with the Congress, thereafter the decline started. Because of lack of leadership, they had to compromise or align with other forces. Against this background of chaos and confusion, BAMCEF emerged in order to redefine and restore the ideological vision and inherited mission of our forefathers. See, initially our seniors in the organization, Mr. Khapade and Mr. Kanshiram and some people from Pune, they have been working only for the Ambedkarites movement. Whereas they have faced an incident there. 70 in हमारा जो डिपार्टमेंट था म्यूनिशन फैक्ट्री है, कांशीराम जो थे, खापड़े साहब का जो सेक्शन था उसी में थे. एक साल में ये अंबेडकर जयंती की छुट्टी वो लिस्ट ऑफ हॉलीडे से डिलीट कर दी. खापड़े साहब छुट्टी पर थे और छुट्टी से वापस आने के बाद उन्होंने वो लिस्ट ऑफ हॉलीडेज देखा, तो फिर मैनेजमेंट के साथ अप्रोच हो गए. तो मैनेजमेंट ने स्टैंड लिया कि ये आपका जो वर्क्स कमेटी है वो वर्क्स कमेटी ने रिकमेंड नहीं किया और इसका फाइट चला. एक बार खापड़े साहब और कांशीराम जी वो जो डायरेक्टर थे हमारे, उनके केबिन में गए, वहाँ झगड़ा हो गया. कांशीराम वाज इमीडिएटली सस्पेंडेड और खापड़े साहब वाज पोस्टेड टू अर्बन कड़ू, बट ही डिड नॉट जॉइन देयर. टेन्योर होने के बाद नया वर्क्स कमेटी इलेक्शन, क्लास 4 में ज्यादा एम्प्लॉयज होते हैं ना हमारे, तो इसलिए क्लास 4 कॉन्स्टिट्यूंसी से ये दीना भाना को खड़ा किया. दीना भाना को चुनकर लाया गया. इन द फर्स्ट मीटिंग इटसेल्फ दीना भाना ने अंबेडकर जयंती की छुट्टी की डिमांड प्लेस की. तो खापड़े साहब का जो ट्रांसफर था दैट वाज समहाउ गॉट कैंसल. देन he made up a mind not to join. ये सस्पेंशन पीरियड में फिर कांशीराम ने जो है ये काफी स्टडी किया है, सभी नेताओं से मिला. The nationwide networking of social mission has been initiated after profound probes to formulate a matching organizational structure. BAMCEF was not started immediately. Initially it was BAMCEA. 14 अक्टूबर 1971 में पहले हमारा SC, ST, OBC एंड माइनॉरिटीज ये एक एसोसिएशन निकाले. आइडिया ये थे कि सारे डिपार्टमेंट का मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे. यानी सेंट्रल का ही नहीं, स्टेट का भी है, कारपोरेशन का भी है. जो जितने एम्प्लॉयज अपने हैं वो उनको इकट्ठा करते थे. और उस पर्टिकुलर मैनेजमेंट के साथ अगर कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में नेगोशिएशन करना है तो वो आदमी नहीं जाएगा, वो दूसरे डिपार्टमेंट का जाएगा. सो कैन ही कैन बोल्डली एंड फ्रीली पुट फोर्थ देयर ग्रीवेंसेस. तो साहब खापड़े हमारे 4-5 लोग हैं, तंबाके, मिस्टर जो मधु परिहार, वो अलाट, और पहले हमारे जो लोग थे खाली 7 ही लोग थे. और मैं पहला उस संस्था का सेक्रेटरी हूँ और कांशीराम साहब चेयरमैन थे. शुरू में बहुत कठिनाई,
और ये होते होते हमने एम्प्लॉयज़ को मिले, उनको हमारी आइडिया बता दी और ये बताने के बाद हमने लोगों से 2-2 रुपए हर महीना कलेक्ट करना शुरू किया. It came up to that power as a federation, employees federation, that Prime Minister, that also like Indira Gandhi, he recognized our representation and action was taken on it. ये सारी की सारी पूरी जवाबदारी ये कंशीराम साहब और खापड़े साहब वो चलाते थे और हम उनके साथी थे. In order to elevate their efforts equal to the task, this Bahujan Employees Association has been changed to BAMCEF. मतलब इसको पहले ये बामसिया को क्यों छोड़ा, मतलब एम्प्लॉइज प्रॉब्लम ये तो कितने दिन तक करेंगे इसका. प्रॉब्लम्स आर द रिजल्ट, कॉन्सिक्वेंसेस हैं, ये परिणाम है. ये परिणाम के कारण क्या है, व्हाट आर द कॉजेस. और जब तक कारण कायम रहेगा तब तक परिणाम आते ही रहेंगे. Then they have realized that this is not an issue, a localized issue, but the things are happening all over the country. And then when they have noticed that the things are happening all over the country, the solution to the problem has to be an all India solution. He decided to form BAMCEF organization on all India basis. See, the idea was conceived in 73, and then it was decided that for 5 years we will take this organization throughout the country. We will do the field work. और कांशीराम was totally free. केडर कैंप लेना शुरू कर दिया है. ये सब केडर कैंप की वजह से थोड़ा और लोगों को मालूम हो गया. सबसे ज्यादा सुविधा क्या है, आरएमएस, पीएनटी, ये लोग सब जगह घूमते हैं. कन्विंस करने का कि भाई ये संगठन हमें क्यों होना चाहिए, हम सब इकट्ठा क्यों होना चाहिए, बड़े पैमाने के ऊपर, यहाँ से जम्मू से कश्मीर से लेके कन्याकुमारी, यहाँ से सौराष्ट्र से वगैरह. तो मैं सोचता था ये बात तो बहुत बड़ी सोचते रहे, लेकिन ये होने वाला है या नहीं वगैरह. ऐसा लगता है, किसी को भी लगता नहीं इतनी बड़ी बात बोलना और काम होना इतना बहुत मुश्किल होता है. लेकिन मैं उनके बारे में ये सोचा है कि ये तो आदमी बात तो बोलता है, कि हमने कई थोड़े ही दिन में ऐसे देख लिया कि वो आदमी जो बोलता है वो करता ही रहता है. This was the first time that Mr. Kashiram gave a slogan for oppressed and oppressors. He was shifted from Pune to Delhi. All resources were provided from Maharashtra alone. उस समय कोई रिसोर्स बाकी जगह में तो था नहीं ना. Along with Ate, Manohar Ate. In 1973, 6th December, they have arranged one function at Delhi, Panchkuya Road. There, they have decided to give birth to this organization named Backward and Minority Communities Employed Federation. And therefore, they have decided to organize the people all over India. Now, while organizing the people at all over India, what was realized that if we organize only the scheduled caste people, you can't solve the problem. And then the people in the different degree are the victims of the Brahminical social order, and therefore whoever are the victims of the Brahminical social order, they have to be organized together to fight Brahminism. उसमें फिर क्रिश्चियन, मुस्लिम, इनको भी इन्वॉल्व किया. Non-political roots और social ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ावा देना चाहिए, ये थीम पढ़े लिखे लोगों को बहुत अच्छी लगी. Their enthusiasm was so strong and will so powerful that they declared that even if there was no way, they would make one and move ahead. 75 time was very critical year, because during June 75 इंडिया में इमरजेंसी लग गई, क्योंकि एक जो हम करना चाह रहे थे वो करने के लिए इन्वायरमेंट डिफ़िकल्ट होता जा रहा था. तो उस डिफ़िकल्टी के मौसम में इन्वायरमेंट में जब हमने काम किया और कुछ सक्सेस ली. पुराने जो साथी लोग हैं
लड़के बच्चे सब लोगों ने बड़ा मेहनत किया, खड़ा किया ये भी। This was the first organized effort to rise above slogan shouting and emotive outbreaks to concentrate on vision and taking ahead the mission. Therefore, self-actualization and social responsibility are the important values to be inculcated among them. Being a collective activity of employees, it remained non-religious, non-agitational and non-political. कांशीराम also used to tell in every speeches, खापड़े साहब उनको literature provide करते थे. 6 times he read that annihilation of caste. और फिर he came to the conclusion. 1978, it was decided to arrange a function at Delhi as a birth of BAMCEF function. And we had to raise the many difficulties in moving the boat club, etc. Ultimately, I succeeded, and there was one advocate come MP, Siddhyat Singh Chaurase. He helped us a lot. He also gave him Kashiram his room in Mavlankaral to stay. हम लोग वोट क्लब पे गए, हमने प्रदर्शनी देखा, वो सब देखा, उनका चार विचार, तो हमने वहाँ जाके कोशिश किया, भाभी हमें रास्ता मिल गया है, हमने ये काम करना है। आओ हम चले नई दिशा की ओर, नई मोड़ पर, नई डगर पर, नई मोड़ पर, नई डगर पर चली है जीवन डोर। आओ हम चले नई दिशा की ओर। Initial reaction तो they took it as a fun. जब हमने बहुजन समाज कंसेप्ट मतलब अडॉप्ट की और इस कंसेप्ट को चलाया, तो they were laughing at us. क्या बहुजन समाज, ये समाज करते हैं, तुम अपने जाति को भी इकट्ठा नहीं कर सकते, तो 85% 6000 जाति को इकट्ठा कैसे कर सकते हैं? पागल है, न्यूसेंस है, ये कुछ नहीं हो सकता. It was like that. ये था उनका. At times people try to attack the leadership also. With all that we have tried to tide over the situation and make them understand what is the prevalent situation. So people started realizing, yes, these are the right type of people, and only BAMCEF could take ahead the mission of Dr. Ambedkar. That sort of trust we could gain. When BAMCEF started functioning, the cultural development of our society being at low ebb, we do not know what is good for us and what is bad for us. This is the most